last class, we dealt with like how to find out effective weight of the flange. We also did with a little bit of introduction, okay, as to what are the different type of T beams, different type of flange beam. एक था आप लोग का T beam, दूसरा L beam, और various notations, and also how to find out effective weight of flange as per IS 456. ठीक है, ये in the screen you can see page number 37, where T beam, L beam, and also isolated are given. So we'll next move to the analysis of different type of T beams, and you can also use the entire thing for L beam also. Okay, only change will be the value of effective weight of flange, BF. Okay. Okay. So the first thing which we'll be dealing with is the position of neutral axis. Now the position of neutral axis in a flange beam may lie in two different positions. One within the flange, and the other one outside the flange. Okay, just you can see the diagram out here. Okay, basic diagram hai. It is width of the flange, then BF, effective depth D, overall depth capital D, BW is the width of the web. Okay, web is this portion. Two reinforcements are given. This is just an example. Okay, DF is the thickness of flange. XU here we're just assuming it is the neutral axis. Okay, so abhi if you are considering the distance of, the depth of XU, now XU may lie out here. यहाँ भी lie कर सकते हैं. Let me change the color out here. It can lie out in the flange system or outside the flange, outside this area. You can lie over in the web portion also. Okay. Now the thing is that based on this situation, we got two cases. Either it will be equal to or less than equal to XU, or it will be greater than DF. Okay, XU will be less than equal to DF, or it will be greater than DF. Greater than DF मतलब आप लोग का अगर ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई करेगा तो आपका XU is greater than DF हो जाएगा. So you get two cases. Now it is very essential to find out कि आपका XU का position कहाँ lie करेगा. ठीक है, तो XU you also can find out how actually you'll find out XU. If you remember, it is the same situation जैसे हम लोग पहले XU निकालते थे. ठीक है, तो let's go a bit step by step out here. Okay, now in the first case is XU less than or equal to DF. अगर ये हुआ सिचुएशन मतलब फ्लैंज एरिया में ही है, फ्लैंज एरिया में रहने से what will be the type of diagram? It will be something of this kind. ठीक है, if you see here, ठीक है, XU is here, this less than, ठीक है,
in this situation, what will happen? As per your assumptions in limit state, the concrete below the neutral axis is not considered. ठीक है, मतलब हम लोग का जो कंप्रेसिव फोर्स देंगे फॉर एनालिसिस, कंप्रेसिव फोर्स देंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन ही they will provide the compressive force, and tensile force कौन देगा? ये reinforcement. As it is. So everything concrete is below the neutral axis is ignored. Now in this situation what will happen? You will analyze the beam as normal rectangular जो singly reinforced हम लोग करते थे, पेज नंबर 96 में होगा, तो उस हिसाब से ही करेंगे. कब करेंगे? If XU is less than equal to DF. So the first thing you have to find out कि you have to find out your just a second. Yeah, you have to find out what is the value of XU and what is the value of DF to find out the location of the neutral axis. Neutral axis found होगा. If it is within the flange, you analyze as a rectangular beam as per as code. Only difference is क्या होगा? B will be replaced by BF. Let's see what I mean by that. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा? कंप्रेसिव फोर्स इनटू इधर कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ आप लोग you can you can draw the stress diagram out here also. ठीक है, stress diagram आप draw कर सकते हैं. So we'll not go into that part, we'll go in a bit detail later on. Okay, so basically compressive force or tension force into lever arm. ठीक है, compressive force is there. So based on this we already found out, we already used this formula. आप लोग पहले भी use कर चुके हैं इस चीज को. So only difference is पहले rectangular beam में width of the beam था, यहाँ बस change हो जाएगा. From tension side it is the same. ठीक है, so this is one case. Let's see the second case. Second case, XU is greater than DF, मतलब ये फ्लैंज एरिया के बाहर लाई करेंगे. ठीक है, if it is so, so it will be something of this kind. Okay, let's see what happens here. In this situation, how will you analyze it? This is just the analysis part. Just because we need the force, हम लोग को force, compressive force चाहिए. टेंशन फोर्स तो आप लोग का सेम होगा. कंप्रेसिव फोर्स अगेन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, concrete will be ignored, so we are considering all the concrete above this thing. So we are just doing the same old thing. ठीक है, तो इस चीज का एरिया क्या होगा? इस चीज का एरिया होगा PW इंटू लेंथ, माने इसका एरिया होगा BXU, और इसका एरिया कितना होगा? दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय DF. तो इस डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का? BF माइनस BW डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हियर ऑल्सो सेम, मतलब इन दो ब्लॉक को अगर हम लोग एक साथ कर दे, सो हम लोग का ऊपर वाला ब्लॉक का क्या आएगा एरिया? BF माइनस BW इंटू हाफ और हाफ एक हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो BF माइनस BW डिवाइडेड बाय 2. सो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय DF. सो दिस इज हाउ योर फॉर्मूला will be there. Similar case. Now we have already used this stress diagram before, so let's see what we can do out here. Okay, okay, if in this situation क्या होगा? This age is equal to 3/7 of XU limit.
or axial lines. We have already also found something of this kind. Okay. Now we all know how this constant distance that means जो rectangular portion का 3/7 axial limit कैसे होगा? This is a second assignment problem which I have already given, and students have submitted that part. So I'm pretty sure you have understood this, and we have also discussed this in the previous lectures also. Okay. So for now, let's see. We go up step by step. H is 3/7 axial limit. Okay, let me just come into this part how 3/7 axial limit or axial कैसे होता. अगर ये वाला triangle आप लोग consider करें, this triangle, it is a similar triangle. ठीक है, ये वाला triangle and this the smaller triangle. I'm just revising it. Okay, तो क्या होगा? हम लोग क्या लिख सकते हैं उसपे? Let's see. We can write 0.002 divided by 0.0035 multiplied by sorry equal to similar triangle के हिसाब से what we can do xu minus h divided by what? H. So if you simplify it, you'll get something of this. Now we can also find x is equal to 3/7 x. So this can be done. Now if your it's a balance section होने से क्या होगा? 3/7 of xu becomes xu limit. ठीक है, there shouldn't be any problem. क्योंकि why I'm converting this, because in IS code x limit, ठीक है, xu limit का वैल्यू xu by d का लिमिट का वैल्यू हम लोग को as per grade of concrete दे के रखा है. I'm pretty sure you know all these things. We have discussed this. ठीक है, based on grade of concrete xu by d limit हम लोग को दे के रखा है. And we can also convert the entire thing into this way. We'll show it out here. 250 के लिए fe 250 हो गया, फिर fe 415 fe 250 के लिए एक्सियल लिमिट अगर मैं उस हिसाब से जाऊं तो एक्सियल लिमिट क्या होगा? एक्सियल लिमिट होगा 250 0.53. ठीक है, दिस इज वेरी थिक. ठीक है, xu by d का वैल्यू हम लोग को पता है, एंड वी कैन कन्वर्ट दिस टू 0.553. 415 के लिए वही 415 के लिए क्या होगा? 415 के लिए होगा कितना? 0.480. वही that also for 500 it will be how much? 0.06D. But we already know as per previous lecture. You can go back into the lectures. So if it is so in place of axial limit based on the grade, I can put these values. तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो h का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ 3/7. We use a different color out here. Okay. 3/7 into 0.53D. So this will give me 0.227D. वही h का वैल्यू अगर 0.48D लिखे 3/7 into this much 0.48D, so it will come in around 0.205D. और 500 के लिए h का वैल्यू आएगा. You don't have to remember this. Okay, I'm just coming to a common point out here.
That's it. So similarly, 0.46 into 3.7, you get around 0.197T. If you see these figures, 0.025, 0.227, 0.197, you'll get, we can say H is nearly equal to 0.2 D. We can come approximately. This is just for analysis purpose. तो अगर ये है तो I can also say H is equal to H by D, sorry, H by D is equal to 0.2. Okay. Now, if this H is equal to DF, if H is equal to DF, then I can also say DF by D is equal to 0.2. Okay, I can say that. Now ये तभी equal होगा जब H is equal to DF. Now H can go anywhere less than this also. ठीक है, तो मतलब मुझे दो कंडीशन यहां से मिल सकते हैं. एक कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन होगा DF by D less than equal to 0.2. The other condition will be DF by D greater than 0.2. It can be. Okay. So let's see all the cases differently. Okay. Now, as we know, this XU and XU limit based on this 3/7 of XU जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब इसके बेसिस पे हम लोग XU अगर XU लिमिट के it can be equal if it is a balanced section. XU can be less than XU limit if it is an under reinforced, and XU can be greater than XU limit for over reinforced. This much we already know. So all these cases will just combine it. ठीक है, हम लोग बस combine करेंगे. Okay. Now if it is a balanced section, for example, real balanced section, ठीक है. And this entire thing is हम लोग जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं अगर XU अगर XU greater than DF हुआ तो, less than DF हुआ तो, you'll be designing as a rectangular beam जो पेज नंबर 96 में दिया गया. अगर ज्यादा हुआ तो this cases will arise. Okay. Let's see. So the first case is balance section. ठीक है. Okay. तो balance section हुआ तो क्या होगा? Basically something of this kind. You keep in mind of this things. Okay. Let's see. You just have to understand. Okay. Okay. So see the diagram carefully. There's nothing new in it. हम लोगों ने बस XU equal to XU limit put किया. ठीक है. XU अगर XU limit के equal है तो क्या होगा हम लोग के पास? No, one second. Yeah. Now ये सिचुएशन होगा. ठीक है. ये सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. ठीक है. हम लोग के पास दो ऑप्शन मिलेंगे अगर XU लिमिट के इक्वल हुआ. इक्वल है तो क्या हुआ? हम लोगों ने क्या हुआ था पहले था कि
h is equal to xu. ठीक है. Now if xu is equal to xu limit, then we also found that तब हम df by d 0.2 हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. पहले हम लोगों ने किया. You can arrive at this situation. अगर this situation arise, तो you have two cases more, sub cases जिसको बोलते हैं. You try and understand this part, okay? मैं फिर से repeat कर देता हूँ entire thing, ठीक है? For xu, sorry, for xu greater than df, अगर ये situation हुआ, तो हम लोग के पास सिंपल ये सिचुएशन आ जाता है. ठीक है. तो ये सिचुएशन पे हम लोग के पास बेसिकली तीन सिचुएशन आता है. क्या? xu इक्वल टू xu लिमिट, xu लेस देन xu लिमिट, xu ग्रेटर देन xu लिमिट. ठीक है. तो फर्स्ट सिचुएशन इज xu इक्वल टू xu लिमिट. अगर xu लिमिट हुआ, ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर xu लिमिट. इफ xu लिमिट हुआ, देन क्या होगा? I can found if xu is equal to xu limit, then df by d is equal to 0.2. If df by d is equal to 0.2, we can find two more cases. ठीक है. एक df by d यहाँ लाई कर सकता है, नहीं तो df by d उससे बाहर भी जा सकता है. So these are the sub cases. ठीक है. So let's see what happens. If xu is equal to xu limit and df by d is equal to, this is the first sub case. So case 1a, df by d is less than 0.2, less than equal to 0.2. अगर ये हुआ तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द वेब एंड कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द फ्लैंज. ठीक है. तो सेम चीज किया हम लोगों ने, बस कुछ चेंज नहीं किया. आई हैव जस्ट कन्वर्टेड xu is equal to xu limit. ठीक है. BF by BW कैसे हुआ? I think so that is very I mean that shouldn't be a very big problem for other. पहले हम लोगों ने किया है, that's why I have given you. ठीक है. So you get this. ठीक है. टेंसाइल फोर्स सेम रहेगा. हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट क्या इन अ डिजाइन AST. For AST, you have to find out moment of resistance. ठीक है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एक्चुअली फोर्स के थ्रू ही जाते हैं, इधर दिस और नहीं तो दिस. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अराउंड डिस्टेंस. तो टेंसाइल फोर्स तो सेम ही रहेगा. इट इज डजंट डिपेंड अपॉन द एक्सयू, बट कंप्रेसिव फोर्स विल चेंज. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस mu क्या होगा? mu force into lever arm and flange force into lever arm. So I think so. Let's see. ये क्या? d minus df by 2. So I think so. This should be very easy to understand. Basically, lever arm कौन सा होगा? इसका centroid tap. This part is df by 2. So the entire part is what? d minus df by 2. That much only. Okay. And these things are given in your IS code, so you don't have to worry about this thing. So page number 96 में कैसा है? I'm just giving you the direct picture of it. Page number 96 में इस हिसाब से है. So basically in one line, if you have this criteria, you have to design the MO or you have to calculate the MU based on this formula. हम लोगों ने XU limit पढ़ा है, but it's the same thing. XU limit and XU max is the
same thing. ठीक है, all other things are same. See here, FCK, you know, BW, weight of the web portion, BF by BW, BF minus BW, DF, D minus DF by D. These things are यहीं से आया ये चीज. Basically, my point is this: you can directly see this formula in page number 96 of IS 456. Okay. Now, first situation is less than 0.2. Second situation is greater than 0.2. ठीक है, x इक्वल टू x लिमिट. अभी भी बैलेंस सेक्शन में ही चल रहा है हम लोग. तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा? बेसिकली कांस्टेंट एरिया, जो कांस्टेंट एरिया था कोई भी स्ट्रेस डायग्राम में, देयर इज अ कांस्टेंट पार्ट एंड देन देयर इज अ चेंज. ठीक है, तो ये वाला कांस्टेंट पार्ट चेंज हो जाए एंड it is denoted by YF. Suppose now it will not be H is equal to whatever we have done. Okay, it will change. So if it is so, so what will happen? The only change is depth of the constant stress block, which is 0.45 FCK, will lie within the flange. ठीक है, पहले कहा था यहाँ. If you remember the previous diagram, let's see. Okay, now I squared ने बोला YF का value है, I squared has said the value of YF is 0.15, XC limit 0.65 DF. The entire YF, this is in small, okay. The YF should be less than DF. Okay, this YF you have to calculate while calculating the moment of resistance. अगर ये situation हो गया, if this situation arises, so let's see. So पेज नंबर 97 में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस हिसाब से दिया गया है. See here, the only change, what changes क्या हुआ previous numerical से, I mean if you previous formula, the only change is DF is converted to YF. The only thing is this: if you see the previous formula, let's once more the previous formula. See here, the DF is converted to YF. Rest is all same. Okay. When this will do? This will be when DF by D is greater than 0.2. अगर less than 0.2 हुआ तो हम लोग previous formula use करेंगे. This is already given in page number 96. Okay. Now this is the XU limit. XU का बैलेंस सेक्शन के लिए ये हो गया. अगर अंडर रेनफोर्स हुआ तो अंडर रेनफोर्स होने से क्या होगा? ठीक है, अंडर रेनफोर्स मतलब, ठीक है, अंडर रेनफोर्स, तो ईच केसेस इज XU ग्रेटर देन DF. ठीक है, सेकंड वाला केस और ये सब केसेस. तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? DF by D 0.2 वाला नहीं चलेगा अभी. ठीक है, it will be 3/7. This is the only difference. ठीक है, जितना if it is DF by 2.2, when it will work, it will work if XU is equal to XU limit, तभी ये वर्क करेगा. That means balance section के लिए यूज करेगा, पर for under reinforce you have to use 3/7. This is for the analysis purpose and nothing else. Okay. So again थर्ड सब केस, अगर DF by D जैसे 0.2 का दो केसेस बने थे,
यहाँ भी दो केसेस बनेंगे. One is df by d less than 3/7 and otherwise df by d greater than 3/7. Two more cases. Okay. So if it is under reinforced and it is if df by d is less than 3/7, तो moment of resistance हम लोग we can again we can prove this by stress block. Stress block से हम लोग कर सकते हैं. Okay. Now this formula is the same formula, but there will be one difference. There will be only one difference. ये x max वाला जो पार्ट है दोनों में, ठीक है, ये x max x by d से रिप्लेस हो जाएगा. That is the only thing. ठीक है. इसके लिए इस सिचुएशन के लिए they have not given direct formula, but it is just modification of the previous formula. Previous formula जो पेज नंबर 96 में है, you can just change this part, replace this part by xu by d. Okay, we can prove this, but I think so. If you go for the book, it's pretty easy. If you have understood the first part, to prove this is not a big deal. Okay. Okay. Similarly, अगर ज्यादा हो गया, सेकेंड वाला फॉर्मूला जहां YF वाला चीज था, बस XU will be XU max का जो टर्म है that will be replaced by XU by D. अगर ओवर रेनफोर्स, थर्ड केस, if it is over reinforced, then क्या होगा? You have to, for analysis again is the same thing as rectangular. X is equal to x limit के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे. But while designing, अगर over reinforced, if it is found, अगर ये वाला situation आ गया, then either you have to redesign it or you have to use a doubly reinforced frame. मतलब ये सब जो अभी तक जितना पढ़ा आप लोगों ने, that is for singly reinforced. Now, if you find it over reinforced, then you either go for redesign और नहीं तो doubly reinforced beam, flange beam आप लोग को करना पड़ेगा. Now, what I mean by this, the first part कि अगर XU limit से greater हो गया, obviously it is over reinforced. And analysis you use XU equals to XU limit. That means किसी situation में आप लोग को neutral axis वगैरह find करना होगा, और there will be some terms की moment of resistance पे they ask. So in that situation you have to use this to find out the moment of resistance. We have done a numerical right here. Okay. Otherwise over reinforced section अगर है डिजाइन करने के लिए, you do not design it for that. ठीक है. We either redesign और नहीं तो doubly reinforced हम लोग adopt करते हैं, doubly reinforced flange beam. So let's, whatever we have studied, let's like sum it up. सम करते हैं इसी चीज को. Let's see. तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा शॉर्टली मैं बताऊं, इफ आई टेल यू a bit shortly, I think this will be very helpful. I tell you to take, I suggest you to take some notes out here. तो अगर डिजाइन करने दिया, if you are asked to design flange beam, ठीक है, if you are asked to design flange beam, तो आपका पहले तो गिवन डेटा रहेगा. ठीक है. ओके. गिवन डेटा रहेगा आपका. गिवन डेटा में क्या क्या रहेगा आपका? बेसिकली BF, BW, width of the web, DF, ठीक है,
AST, FCK, and FY. If these things are given, or you can easily find out. So what my point is, let's see. This is very, very important. This is just the summary of whatever complex cases, like all the cases and all we have done. Let's see what I mean by that. तो पहले तो हम लोग इन सिचुएशन पे मतलब based on this values, some of the values, what we do, let's see, let's do a flow chart. Okay, we find XU. ठीक है, we also find XU limit. किस पे बेस होगा? FY पे, माने 250, 415 और 500. ठीक है, नाउ XU हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर ये सब दिया गया है, XU हम लोग कैसे निकालें? पहले फाइंड FU, we'll find out by the same old formula, 0.87 FYAST divided by 0.36 FCK into B changes to BF. यहाँ से हम लोग XU फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये XU हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करेंगे DF से. ठीक है, तो DF के चक्कर में हम लोग के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक ऑप्शन क्या है हम लोग का? एक ऑप्शन है कि XU लेस देन इक्वल टू DF. दिस में ऑकर XU लेस देन DF. अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, द इजी पार्ट, यू डिजाइन एस रेक्टेंगुलर बीम. हम लोग डिजाइन एस रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम. ठीक है, तो बाकी हम लोग CU, T, MU, तो पेज नंबर 96 के हिसाब से हम लोग I can find out. Only change क्या होगा? Change B will be converted to, just replace B by BF. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ओके, दूसरा कंडीशन हो सकता है हम लोग का XU ग्रेटर देन DF. ठीक है, ये हो सकता है. तो अगर ये सिचुएशन हो गया, हम लोग के पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन. क्या था 3 ऑप्शन? पहला ऑप्शन XU इक्वल टू XU लिमिट, माने बैलेंस एक्शन. सेकेंड, XU लेस देन XU लिमिट, माने अंडर इंटरसेक्शन. और यहाँ आपका XU ग्रेटर देन XU लिमिट, माने आपका ओवर इंटरसेक्शन. ठीक है, अगर XU इक्वल टू XU लिमिट हो गया, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन और हो सकते हैं. कौन सा दो ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज DF by D इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0.2 हो सकता है. नहीं तो आपका हो सकता है DF by D ग्रेटर देन 0.2. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेसिव फोर्स, टेंशन, टेंशन फोर्स और MU निकाल सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला आपका पेज नंबर 96 में दिया गया है. ठीक है, अगर DF ग्रेटर देन 0.2 हो गया तो we can find out CU, T, MU, पेज नंबर 97 में दिया. दिस इज गिवन इन 96, गिवन इन. क्या चेंजेस आएंगे यहाँ? YF टर्म आ जाएगा. ठीक है, you have to determine the YF. Now
इफ इट इज अंडर रेनफोर्स में क्या होगा, हम लोग के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं अगेन, df by d 0.2 अभी नहीं 3/7, so df by d sorry just a second, this will not be df by d, if I made a this change in the last thing, df by d नहीं df by xu हो जाएगा, तो df by xu क्या हो जाएगा यहाँ 3/7 and df by xu greater than 3/7 हो सकता है, ठीक है, दिस इज द चेंज, ठीक है, ये अगर हो गया आप अगेन ये सब निकाल सकते हैं किससे, पेज नंबर 96 से, बस एक चेंज करना है, आई हैव ऑलरेडी मेन इन द वीडियो, यू कैन गो बैक, ठीक है, क्या चेंज करना है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, सिमिलरली चलो बता ही देते हैं क्या चेंज करना था, हम लोग को एक्सयू मैक्स बाय डी को एक्सयू बाय डी में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना है मतलब वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, सिमिलरली if it is greater than 3/7 you can also calculate these things, usually पेज नंबर 97 में है, ठीक है, यहाँ में क्या है y हैव कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो have to you can also calculate these things very easily, ठीक है, these things are clear, now it is over enforce होने से हम लोग के पास क्या ऑप्शन था, इधर आप रीडिजाइन करें, नहीं तो आप doubly reinforced flange section या doubly flange reinforced section जैसे भी बोले आप, so that you can design, you have to design a doubly reinforced section, but it is a flange because we are discussing flange. Now this is all about analysis and the theoretical part. In the next class we'll be dealing with the numerical based on depths, okay.